Assalamu alaikum. Let's discuss about some basic potential flows. In the previous lecture, we discussed about the potential flows and how they are related with the stream functions. Now let's come to the application of those flows. The first flow is a uniform flow. The simplest plane flow is one for which the streamlines are straight and parallel. सबसे बेसिक जो फ्लो है वो ये है कि आपके पास जो स्ट्रीम लाइंस हैं, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रीम लाइंस की, वो स्ट्रीम लाइन जो है वो पैरेलल है और स्ट्रेट है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एक ऐसा एक लेट्स कंसीडर अ फ्लो जिसके अंदर u इक्वल्स टू कैपिटल U which means it's a constant flow and v equals to 0 which means flow is along x-axis and parallel to x-axis और यहाँ पे इसका कोई y component मौजूद नहीं है। So if you see that अगर आप यहाँ से u कैप स्मॉल u इक्वल्स टू कैपिटल U एंड v इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 0 है अगर आप गौर करें तो ये जो लाइंस हैं, जो ऑरेंज लाइंस हैं यहाँ पे xi इक्वल्स टू xi1 एंड दूसरी लाइन पर xi को xi2 एंड फिर xi3 xi4, दीज आर कांस्टेंट स्ट्रीम लाइन, सॉरी दीज आर स्ट्रीम लाइन जिसके ऊपर xi की वैल्यू कांस्टेंट है। और आप गौर करें कि इन लाइंस के परपेंडिकुलर दीज डॉटेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग इक्वल पोटेंशियल लाइन जिस पर phi 1 and phi 2 आर कांस्टेंट। तो हाउ टू फाइंड phi फॉर दिस फ्लो? दैट्स प्रीटी सिंपल। आपके पास u बराबर है कैपिटल U के, तो वी नो दैट u is related with phi with this relation डावा phi upon डावा x equals to कैपिटल U। आपने सिर्फ u को रिप्लेस कर दिया with डावा phi upon डावा x। नाउ when you integrate this function you get ux plus c and by applying limits, अगर आप यहाँ पे 0 जाएगा because it's not related, so phi equals to ux। now moving on, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि हाउ टू फाइंड xi, तो सिमिलरली दिस इज स्मॉल u एंड स्मॉल u कैन बी रिप्रेजेंटेड एट डावा xi upon डावा y equals to u। so when you integrate it you get xi equals to u capital U y, right? So these two relations actually uh, are representing the stream functions. And so if you can see that this xi, which is a stream function, can be found by integrating this equation of this simple flow, right? So similarly अगर आप एक simple flow है जो कि parallel है but it is just a minute, hold on, parallel है but it is making an angle alpha, and so it's again parallel straight lines है। so these orange lines are representing streamlines while these dotted lines are representing equipotential line. So these are the generic relations for any on any uniform flow, right? Uniform flow फिर again जिसमें हमारे पास lines जो हैं parallel हैं, and this is represented by u x cos alpha y sin alpha, where alpha is an angle and u is the velocity, constant velocity, and similarly xi यहाँ पे x y जो है हर point के ऊपर बदल जाएगा, so function of x and y, u is constant, right? So moving further, um, uh, another simple flow is source and sink, right? So although these source and sink do not exist in nature, but you can models real flows as source and sink। so source and sink होता क्या है? फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास एक पॉइंट है जहाँ से फ्लो जो है वो रेडियली बाहर निकल रहा है और उसका so these orange line are representing the flow streamlines, right? so यहाँ पे it is better to represent this flow in terms of cylindrical coordinates because यहाँ पे vr is the radial velocity। so ये जो orange lines हैं these are representing streamlines, right? so अगर आप गौर करें कि let's consider कि अगर आपके पास m is rate mass flow rate per unit length, तो it is easier to understand, समझना आसान है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पाइप है, उस पाइप का ये फ्रंट व्यू है, विच मीन आपको सिर्फ डॉट नजर आएगा। ये पाइप इनटू द पेपर जा रहा है और पाइप के ऊपर मैं बहुत सारे अगर होल्स कर दूं एक सर्कल के अंदर, तो आपको लगेगा कि फ्लो जो है वो रेडियली पाइप से बाहर की तरफ निकल रहा है, राइट? सो अगर मैं इस फ्लो रेट निकालना चाहूँ तो दैट्स प्रीटी सिंपल। अगर आपके पास फ्लो रेट कैसा निकलेगा, वी आर
passing through this line, this dotted circle, where the circumference is 2 pi r and into the length, but length is per unit length, so we can just simply ignore it. So the flow rate per unit length can be represented by m equals to 2 pi r the circumference, जो कि सर्कल से उस हाइपोथेटिकल और इमेजनरी सर्कल से बाहर निकल रहा है, एंड वी आर इज द रेडियल वेलोसिटी. सो यहाँ से वी आर इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई आर आ गया, राइट. सो which means यहाँ पे v theta 0 है because the flow is radially outward, and so there is no component along the tangential direction of the tangential direction, right. So आपके पास v theta की वैल्यू यहाँ पे 0 है, so vr क्या है, the m upon 2 pi r, so यहाँ से डावा और v theta equals to 0. So if you solve this relation you can find phi equals to m upon 2 pi ln r. आपने सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आपके पास phi की वैल्यू यहाँ से आ गई, एंड सो m नाउ अगर आपके पास m क्या है, बेसिकली इट कैन बी, इट इज द फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ. अगर अब m पॉजिटिव है विच मीन्स इट्स अ सोर्स, मतलब फ्लो जो है वो रेडियली आउटवर्ड बाहर निकल रहा है. इफ m इज नेगेटिव तो फ्लो जो है वो रेडियली इनवर्ट जा रहा है. सो यहाँ पे एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई है. सो आपके पास इफ यू हैव वी आर विच इज m अपॉन 2 pi r, so you can find xi as well which is m upon 2 pi theta, right. So आप गौर कीजिए कि यहाँ पे ln r है phi की वैल्यू, और यहाँ पे m अपॉन 2 phi theta है. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है जो कि नज़र भी आ रहा है कि आपके पास दीज आर स्ट्रीम लाइंस, और यहाँ पे xi जो है वो m upon 2 pi, दिस इज the slope, and theta is the the variable, right. So आपके पास xi की वैल्यू जो है वो m अपॉन 2 पाई थीटा आ गई, और आपके पास phi की वैल्यू m upon 2 pi ln r, right. So for different values of r you will be having concentric circles which is intersecting these lines at 90 degree orthogonally. So this is how you plotted this source, right. So आपके पास flow would be infinite at r equals to 0. This is called singularity, but this is no, this is not physically possible. So the important points to take from this source and sink is, a source and sink is a radially outward flow. If it is towards the point it is sink, and if it is exiting it is source. For source m is positive, m is the strength of the source and sink, or the rate of volume flow rate per unit length, right. इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि वी आर यहाँ पर होता है, वी थीटा नहीं होता, बिकॉज द फ्लो इज हैपनिंग प्योरली इन रेडियल डायरेक्शन, वेर एज वी थीटा इज 0. From that VR and V theta we found phi, and we found zeta m upon 2 pi, right. Now this is really important to understand these relations mathematically, because if you see this xi equals to m upon 2 pi theta, so this is a linear equation. For example, if I put xi equals to 1, right, so this would become 1 equals to m upon 2 pi theta, right. So which means m is constant, which is the rate of volume flow rate per unit depth, 2 pi is constant, and if I substitute xi with 1, this is constant. So you are having only theta as a variable, right. So this is the linear equation of a line. It's a linear equation, right. So you will be having a line, right. So आप imagine गौर से देखो तो यहाँ पर भी एक line ही बन रही है with an angle, certain angle theta, एंड बट इस लाइन के अक्रॉस जो सर्कल बन रहा है वो क्या है, phi equals to constant, which means which is this m upon 2 pi ln r, concentric circles, right. So this is the source and sink. I would again repeat, this is an hypothetical flow which does not exist in reality, but आप किसी similar flow को इस तरह मॉडल कर सकते हैं ताकि, और ये इस तरह मॉडल करना रिलेटिवली आसान है. तो मॉडलिंग अजम्पशन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. मॉडलिंग अजम्पशंस आर व्हेन यू मॉडल अ सिमिलर फ्लो. पहली assumption क्या है कि फ्लो इन्वेस्टेड हो और फ्लो कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है. अब लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंक है. no not sink exactly, the pipe is a good example. एक पाइप है, उस पाइप से फ्लो बाहर निकल रहा है, बट फ्लो पाइप की एग्जिट जो एंट्रेंस है वहाँ, जो उसका एग्जिट है वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि पाइप के ऊपर आपने होल्स कर दिए हैं. सो यू विल सी दैट द फ्लो विल बी exiting the pipe radially outwards, right. So that flow can be modeled as a source flow, uh, right. Got it. So moving on,
We will solve some numericals about source and sink, so don't worry about that. Now vortex. Vortex is a flow which is exactly opposite to the source. Source and sink flow. What is vortex? Vortex is a flow जिसमें आपके पास flow जो है वो tangentially हो रहा है. There is no radial component of the flow, which means VR बराबर है 0 के और V theta बराबर है K upon R के. Uh, which what is K upon R? This is exactly the same relation जो आपने पीछे अगर आप गौर करो कि K phi equals to K theta. This relation was M upon 2 pi theta for xi for the source and sink relation. So यहाँ पे exactly opposite हो गया. जो रिलेशन फाई का था वो रिलेशन जाई का बन गया और जो रिलेशन जाई का था वो रिलेशन फाई का बन गया. तो यहाँ पे फाई जो है वो लीनियर रिलेशन है जबकि जाई यहाँ पे लॉगरिथमिक रिलेशन है विच इज माइनस के एल एन आर. सो के इज अ कांस्टेंट. सो के कुड बी के या कांस्टेंट उसकी वैल्यू गिवन होती है आमतौर पर. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो फ्लो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है. द गुड एग्जांपल अबाउट वॉर्टेक्स फ्लो इज अगर आप एक सिंक के अंदर जब पानी पानी खोलते हैं तो यू सी some circular motion at the center of the sink, and then that motion is happening is in a circular motion. आप उस flow को although that flow is quite complex compared to the real the vortex which we are discussing here, but in order to to reduce or reduce the difficulty आप इसको मॉडल कर सकते हैं विद सर्टेन एक्यूरेसी. कुछ एक्यूरेसी आपको लूज करनी पड़ेगी मगर इसका आसान ये है कि आप जो है वो आपका न्यूमेरिकल आपकी जो कॉस्ट है वो कट कट हो जाती है. तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वॉर्टेक्स और आपके वॉर्टेक्स है, सोर्स है, सिंक है, यूनिफॉर्म फ्लो, ये सब क्या है? पोटेंशियल फ्लोज हैं. सो व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट them later in the lectures. Another potential flow, which is a combination of a source and sink, is doublet. So as we discussed earlier, आपके पास Laplacian equations है जो 5 values आती हैं. 5 are those potential flows. जब आप उनको add कर लेते हैं तो आपके पास एक नया flow बन सकता है which could be phi 3. Phi 1 phi 2 equals to phi 3. Phi 3 is another flow जो कि combination है जो combined effect देगा phi 1 और phi 2 का. तो उसकी एक बहुत अच्छी example है doublet. Doublet is a flow जिसमें आपके पास एक source है एक sink है, right? So source and sink are combined with each other. So xi of a source and sink are separate can be added together. तो यहाँ पे जो phi 1 है that theta 1 sorry is written with minus m upon 2 pi, and when you this is phi 2 is for the source. When you add them the xi equals to minus m upon 2 pi 2 pi theta 1 theta 2. This is the combination of xi is it's a combined xi or combined stream function for source and sink, right? So अगर आप गौर if I use the relation tangent theta of this relation, यहाँ पे अगर हम tangent theta अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या रिलेशन, यहाँ पे आपने पहले सेपरेट किया m अपॉन 2 पाई फाई को इधर ले गया और थीटा 1 थीटा 2 को यहाँ लिखा. यहाँ पे हमने tangent अप्लाई किया तो you have a relation which is tangent of minus 2 pi xi upon m and tangent of theta 1 minus theta 2. So this applying the trigonometric relation आपके पास ये relation आ गया. So now this is important. Tan theta 1 is equals to r sin theta upon r cos theta minus a. So what is r? R is the radius for the radius at a certain point, arbitrary point. If you apply the trigonometry on this figure, geometry, simple geometry अगर आप apply करें तो you will see that theta 1 which is theta 1 here, tan theta 1 is basically this side divided by this side. So you will see that r sin theta upon r cos theta minus a would give you tan theta 1. Similarly, tan theta 2 can be found from applying the same geometrical relation on this figure, right? So by replacing these values here, you see that this is 2ar sin theta upon r square minus a square. So now taking a tangent inverse and tangent inverse or moving this side, this values on the right hand side, you see this relation. So for example, a is the distance between source and sink, right? If the a is very small, what would happen? This term become very small. This term become very small. a अगर बहुत छोटा है, a क्या है? a sink और source sink के दरमियान का distance, तो आपके पास ये term बहुत छोटी हो जाएगी. तो tangent inverse of a small angle is basically that angle. So you can simply omit tangent inverse. So this relation is basically the xi of a source and sink, and which can be
When you plot this value, you will see these lines, um, these lines in the grid, in the sorry in the plane, where m जो है वो same it's a mass flow rate per unit area or per unit length, a जो है distance between source and sink है, r radius है, और sin theta आपको पता है क्या है. Moving on, अगर आपके पास doublet is formed, okay, how we doublet is formed. Doublet is a combination of source and sink when you approach, when the source and sink are approaching each other, and as if their distance between the two becomes almost zero. So in order to keep this ma upon phi relation constant, you need to have hypothetically m tends to infinity. So when you apply this, you get r upon r square minus a square, which is 1 upon r, because a is 0 approximately. So अगर आप गौर कीजिए तो इस रिलेशन के अंदर m और r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन r बन गया, और m a अपॉन फाइव जो है दैट इज दैट नीड्स टू बी कांस्टेंट, राइट. तो m upon 5 constant है, and this term becomes 1 upon r when r is when a is approaching to 0. That relation becomes minus k sin theta upon r. k की वैल्यू यहाँ से k की वैल्यू यहाँ से बराबर किसके बराबर है, m upon 5 के. So this relation, this xi, when you plot this xi, you basically are plotting the streamline of a doublet flow, which is a combination of source and sink when they are approaching each other, and the distance between the source and sink becomes almost zero. Similarly, when you have xi, you can find the phi of the corresponding flow, which is k cos theta upon r. And here there is a representation of doublet flow when you have a combination of source and sink approaching each other. Similarly, this is another example. यहाँ पे जो blue lines हैं, these are sorry constant xi line, which means this is a streamline, and these dotted lines are representing the equipotential lines which are having constant potential. uh, okay, I hope यहाँ पे ये doublet clear हो गया होगा. If you have any question, I know there are lots of things which are not clear right now in your minds, because these concepts are pretty abstract compared to the fluid which you have studied so far in your previous classes. Don't worry, we will discuss these in the online lectures. If you have any query, please ask me. Okay, now this table is also provided in your book. This shows the phi values and xi values and velocity components of different flows which we have discussed so far. We omit this one, which is a free vortex and free vortex. So forget about this one. We're not dealing with, right, we will not be covering this topic in the course. So we will be only concerned with the uniform flow and source and sink and the doublet. So this table gives you a summary of the velocity potential values, stream function, and velocity components of different flows, right, different potential flows. Okay, thank you very much.